So good morning everybody. We'll continue with our topic state legislature, okay, and state executive. Under state executive we were talking about council of ministers. Under council of minister, today we'll be talking about composition of council of ministers. Composition of council of ministers. Priyanshi, please do take notes, okay? Composition of, yes Adam, composition of council of ministers. Composition of council of ministers. लिख लो. As such कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई साइज नहीं स्पेसिफाई किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना बड़ा होना चाहिए. कैन राइट आउट. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई the size of the state council of ministers or the ranking of ministers. Full stop. Or the ranking of ministers. Okay, full stop. They are determined by the CM. They are determined by the CM according to demand of the time and requirement of situation. According to demand of the time and requirement of situation. Requirement of the situation. अच्छा, जैसे कि there were category of ministers at the parliament level. यूनियन लेवल पे आपको पता है कौन कौन कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा. कैबिनेट मिनिस्टर्स हमने पढ़ा. देन वी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स. Similar kind of categorization is there at state level also. Write down. Just like in the case of center, quickly. Just like we are studying composition of council of ministers. ठीक है, एक लाइन ही लिखवाई है मैंने. ओके, just like in the case of the center, state 2 consists of 3 categories of ministers. State 2 consists of 3 categories of ministers. अब पहला लिख लो कैबिनेट मिनिस्टर्स. इस तरीके से या तो आप चार्ट बना लो. COM 3 कैटेगरी, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. चार्ट बना लो. यस आदाम ने, वेयर आर यू बिजी बेटा? मोबाइल साइड में रखो. नहीं, चलो रखो. तो क्या मतलब है, दो दो कैसे पढ़ाई करोगे? वो भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे? नहीं, सच तुम्हारी टीम है, तुम्हारे साथ टीम को पढ़ाओ. टीम पढ़ लेगी, तुम अकेले थोड़ी ना हो. चलो, और अभी टाइम मिलेगा आपको. एग्जैक्ट 11:30 नहीं स्टार्ट हो जाएगा. यू कैन रीड आफ्टर दैट. ठीक है. हाँ, सीक्वेंस से आएगा. और अगर कुछ बजर आउट होगा तो आई हैव नो क्लू, बट सीक्वेंस से आता है. एंड ऑल ऑफ यू विल गेट चांस. आप तो सब टीम से नॉट लेस देन 30 आई गेस.
इतनी टीम्स तो होती हैं because everybody and it's very nicely done business quiz. इतना मुझे आइडिया नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ तो फिर लिखा होगा. ओके, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम. चलो फोकस ऑन दिस राइट नाउ. कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में लिखो. नहीं नहीं, दो पॉइंट्स हैं बस, छोटा छोटा. मेजर पोर्टफोलियोज गिवन लाइक जैसे एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस, राइट. कैबिनेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, इवन यूनियन लेवल पे, उनको मेजर पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं. मेजर पोर्टफोलियोज गिवन लाइक एजुकेशन, फाइनेंस, डिफेंस एटसेट्रा. डू दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स? Cabinet ministers cabinet meeting, and yes, they attend cabinet members attend cabinet meetings. Cabinet members attend cabinet meetings. Next, very quickly, ministers of state. Ministers of state. Are they cabinet members? No, cabinet members nahi hote. Ministers of state, they are not cabinet members. They are not cabinet members. They are either given independent charge of departments. They are either given independent charge of departments. They are either given independent charge of departments or can be attached to cabinet member. Or can be attached to cabinet member. Charge of department or can be attached to cabinet member. Will they attend cabinet meetings? Ministers of state? बिल्कुल ही नहीं attend करेंगे. Yes, very good. Okay, write down. Won't attend cabinet meetings. Only will attend only when invited. They'll not attend cabinet meetings. Will attend only when invited. अटैच टू ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर्स लिखा है ना, टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. ठीक है, अब आ जाते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स. आर दे कैबिनेट मेंबर्स? अच्छा, सिर्फ इसको सिंपली लिखो अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. दे आर आल्सो अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. डेप्यूटी मिनिस्टर्स लिखो, दे अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. And assist them in their administration. And assist them in their administration. In the administration, of course, of the state legislature. ठीक है, and political duties. The legislature and of course they assist in political duties. Assist in political duties. Will they attend cabinet meetings? ये भी नहीं, they'll not attend cabinet meetings. Main cabinet ministers ही attend करते हैं, बाकी लोग सिर्फ invitation अगर स्पेशली बुलाया जाता है, only then they attend cabinet meetings. ठीक है, ये मैंने पार्लियामेंट में भी कराया था आपको 3 कैटेगरी. एक नोट लिख लो, नोट. अच्छा, who is above all these council of ministers? Who is the person? Chief minister. लिख लो, above all the ministers stands the CM, chief minister. हाँ हाँ, नोट में लिख लो, जैसा लिखना है लिख लो उसको. एक और नोट है, ये वैसे मैंने लिखवा दिया है वो नोट जो आपको एक लिखवाना था ना, मत लिखो उसको. यही सेम चीज मुझे लिखवानी थी कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स, दे अटेंड ओनली व्हेन दे आर स्पेशली इनवाइटेड. ओके, नाउ राइट डाउन about further points about council of minister. It is the highest decision making body. Council of minister, it is the highest decision making authority.
कैबिनेट के बारे में बता रही हूँ आपको. बस that's it. बस that's it. Now write down decision making authority in political administration system, in political administrative system of the state. In political administrative system of the state. मैं बात कर रही हूँ कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब इसमें जो कैबिनेट वाला जो सेक्शन है स्पेसिफिकली वो क्या है. ओके, देन राइट डाउन इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. Then it is a chief coordinator of state administration. Next, it is the chief coordinator of state administration. It is the chief coordinator of state administration. State administration. It is the advisory body to the governor. It is the advisory body to the governor. Then it is a chief crisis manager. It is a chief crisis manager that deals with emergency situations. It is a chief crisis manager that deals with emergency situations. That deals with emergency situations. It is a chief crisis manager that deals with emergency situations. Next, it deals with major legislative and financial matters. It deals with major legislative and financial matters. Next, last point, it exercises control over higher appointments like exercises control over higher appointments like constitutional authorities, higher appointment like constitutional authorities, and senior secretariat administrators. And senior secretariat administrators. Senior secretariat administrators. अच्छा, कुछ कैबिनेट कमिटीज में नहीं करा रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कैबिनेट कमिटीज होती हैं, टास्क किए जाते हैं. दो तरह की कैबिनेट कमिटीज होती हैं, एक स्टैंडिंग होती है, एक एडहॉक होती है. स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं? परमानेंट कमिटीज होती हैं. एडहॉक क्या होती हैं? परमानेंट होती, सॉरी टेम्पररी होती है. लिख लो कैबिनेट कमिटीज. कैबिनेट कमिटीज, टू टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज आर देयर, स्टैंडिंग एंड एडहॉक. परमानेंट कमिटीज तो आप समझते हो, जो डिसमेंटल नहीं होती हैं, ठीक है. पर स्टैंडिंग कमिटीज मतलब परमानेंट, ब्रैकेट में परमानेंट लिख लो, एडहॉक में टेम्पररी. बट व्हाट आर एडहॉक कमिटीज मैडम? व्हाट आर एडहॉक? तो एडहॉक कमिटीज अदब श्वेता, वो कमिटीज जो टेम्पररी पीरियड के लिए स्टैब्लिश करी जाती है. जैसे कोविड के टाइम पे बड़ी सिचुएशन खराब हो गई थी, तो कोविड वाली सिचुएशन से डील करने के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश करी गई. एंड वंस द टास्क ऑफ दैट कमिटी इज डन, सच अ कमिटी इज डिसमेंटल्ड. तो कोविड तो हमेशा नहीं रहेगा ना, वो जो पीरियड था उसके लिए सब भैया मेडिकेशन का स्टॉक है कि नहीं है देश में, हॉस्पिटल्स का क्या हालत है, जो भी है,
उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, उस पे जो चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी, वो उस कमिटी का काम था. बट दे वर ऑल ऑफ टेम्पररी नेचर. परमानेंट होती हैं, परमानेंट वो कमिटीज होती हैं जहां पे आपको हमेशा, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कोई कमिटी है, बजट से, वो भैया हमेशा ही काम आनी है, ठीक है, क्योंकि वो काम हमेशा देश में रहेगा. सो दोज कम अंडर परमानेंट कमिटीज और स्टैंडिंग कमिटीज. एडहॉक में तो समझ में आ गया, दैट डील विद इमरजेंसी सिचुएशन एंड दे आर डिसमेंटल्ड द मोमेंट द टास्क इज डन. कर लोगे ये चीज, ये लिखवाने की जरूरत है क्या? लिख लो टेम्पररी का, इफ यू वांट टू राइट. दीज कमिटीज आर सेट अप बाय सीएम. टेम्पररी कमिटीज में लिखो are set up by the CM according to the emergency and requirement of the situation. And so the nature and their nomenclature, and so the nature and their nomenclature and composition, and so the nature and the nomenclature and composition varies from time to time, varies from time to time. So that is all with Council of Ministers. अब हम एक important topic पे आ जाते हैं. And we have already covered under the union, that is parliament. वैसे ही पार्लियामेंट जैसा ही स्टेट लेवल पे क्या होता है श्वेता? जैसे पार्लियामेंट होता है यूनियन लेवल पे, वैसे स्टेट लेवल पे क्या होता है? सो द टॉपिक इज स्टेट लेजिस्लेचर. राइट डाउन, स्टेट लेजिस्लेचर.